and we know where Polygon and Solana and everything is going to be there. And then tomorrow we will see more of them. I'm not saying that it is not good. You shouldn't diversify. I think you should continue to diversify, but focus where institutions focus is. Institutional focus is still as an alternative asset, it's only Bitcoin. If we see something further beyond that, because if they are not worried about speed and everything else, scalability and all of that, I don't think there is anything else beyond that. So, one last question before we let you go and end this conversation on a positive note, since we are talking about those sectors, and you really spoke well about what are the events that are actually that will drive the Web3 ecosystem to the next level. You spoke about ETFs, you spoke about BlackRock, the broader concerns, and what is the next step, Naeem? What are the sectors that are going to get good traction from here on? Talking about artificial intelligence, you spoke about artificial intelligence, ChatGPT, and its side effects or impacts, or the positive aspect on the Web3 ecosystem. What is your one take on those sectors that will do really well for our retail investors? Okay, so I'm going to give you the answer first very quickly, and then we'll go into the background. The sectors which are really going to perform well is the sectors or the products that we use in our daily lives. And what's the current trend? The current trend is the EV market, right? Anything which is going to be supporting the EV space, the electric car space, is going to do extremely well. There's a huge opportunity in them. And don't necessarily always think about, oh, this company is not public, I cannot get into this particular company. Guess what? So many particular companies, when they go for IPO, they get hit so badly. For example, WeWork. Look at WeWork today. It's trading at a fraction of a price today where it was before, or even in terms of its IPO prices. Is WeWork model is here to stay? Yes, it will. Would you use WeWork in your daily life? Yes, you would. You would use WeWork offices, right? Because it helps you to have an office without having a large commitment, without signing up the big leases. You can just go and then use an office for an hour or 2 hours. That's a good stock to own for you now. Again, in the EV space, it's so huge. The industry is very much at the beginning. More importantly, the infrastructure to charge these particular vehicles, that is absolutely humongous to go in. And now going about the hype, what is going to work for Web3 and what is not going to, I think, like, there was a point when I used to think, metaverse is going to be really good, it's really great. But then I thought about, let's say that you are going to a hotel in Goa, or you're going to a hotel in Switzerland, or you're going to a hotel in Miami, wherever. They created a metaverse in a way. They had a www.thewebsite.com. Before you get there, you could see what the hotel is going to be. That itself, for me, was sort of a metaverse. But then there was another form of a metaverse which you could actually visualize. If you're going with your parents who are elderly, you will know exactly, this is the path you go, this is where you're going to go. And then I could perfectly understand the application of that. And I could see bigger hotel chains creating metaverse. Fantastic. It's a great marketing opportunity as well for them, because people get to experience. If you get to experience, you are more likely to buy anything rather than just the hype. Fantastic. So from that perspective, I'm still optimistic, but I think the hype element is, of course, GITEX is going to be here next week. We're going to see where the metaverse sits. And again, it's all about AI over there. All right, Naeem, thank you so much for talking to 3.0 TV. It was a pleasure having you. You spoke really well about, what are the factors that are going to impact the cryptocurrency market going forward, and what are the technologies that are going to be the market maker. Thank you so much. Whether you are an entrepreneur, investment banker, or market participant, you would definitely want to know about mergers and acquisitions, fundraising, and which way millions of dollars are heading in the big deals of the Web3 world. Find out all of that and more on a special show, Deal Corner, every Monday at 6:45 p.m. only on 3.0 TV.
वेलकम टू द पेट मेटावर्स। हेलो, हाँ, मैंने कहा था ना पेनी को वॉक पे लेके जाने वाली हूँ, बस वही हूँ। तो आ जाओ, घर आ जाओ। अरे बाबा, मैं घर पर भी हूँ और पार्क में भी। अरे नहीं नहीं, पागल नहीं बना रही हूँ, सच में पेट मेटावर्स की दुनिया में सब पॉसिबल है। अच्छा चलो, तुम घर आओ, फिर समझाती हूँ। ओके बाय। चलो पेनी, बाद में मिलते हैं, घर पर गेस्ट आ रहे हैं। सी यू लेटर। ये जो आपने देखा डिजिटल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में इन एंड आउट, स्पेशली फॉर पेट लवर्स, ये सच में हो सकता है। जी हाँ, पेट पर जान छिड़कने वालों से लेकर उनकी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिना उठाए उन्हें पसंद करने वालों तक के लिए मेटावर्स ने बनाई है एक नई दुनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पेट मेटावर्स के सबसे अमेजिंग फीचर के बारे में। रियल वर्ल्ड में पेट एनिमल्स के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, हॉर्सेस और कोई सिर फिरा हो तो शेर पाल लेगा। लेकिन मेटावर्स में आप जिस किसी भी एनिमल को चाहे अपना पेट बना सकते हैं। इतना ही नहीं, मेटावर्स की दुनिया में आप अपने पेट को खुद डिजाइन भी कर सकते हैं। जरा सोचिए, व्हाट ऑल यू कैन डू विद योर इमेजिनेशन। अगर आपको जुरासिक पार्क का डायनासोर पालना हो या फिर गेम्स ऑफ थ्रोन्स की खलीसी की तरह ड्रैगन्स का शौक हो, तो आप पेट मेटावर्स में ये सब कुछ चुटकी बजाते ही कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर जैसे द जंगल बुक के बगीरा, बल्लू से लेकर खूंखार से लगने वाले शेर खान तक को भी अपना पेट बना सकते हैं। अब पेट मेटावर्स की दुनिया में जाने के लिए आपके पास एक दो नहीं बल्कि 4 ऑप्शंस है, जिसमें मेटापेट, मेटागोची, एक्सी इन्फिनिटी और पॉपुलर क्रिप्टोक्रिटीज का नाम शामिल है। इन चारों प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करिए और बिगिन योर जर्नी इनटू पेट मेटावर्स राइट नाउ। पेट मेटावर्स के साथ लोगों के जुड़ाव का एक बहुत ही स्वीट और इमोशनल रीजन भी है। अगर आप अपने प्यारे पेट को खो चुके हैं और आप चाहकर भी उसकी यादों से खुद को अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो इस दुनिया में ना सही लेकिन मेटापेट की दुनिया में आप अपने लॉन्ग लॉस्ट पेट को क्रिएट करके उसे नया डिजिटल अवतार दे सकते हैं और उसके साथ मेटावर्स में वो हर चीज कर सकते हैं जो आप रियल लाइफ में उसके साथ किया करते थे। इतना ही नहीं, आप रियल वर्ल्ड की तरह ही पेट कंपटीशन में भाग लेने से लेकर अपनी डिजिटल पेट कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि आप पेट के लिए रेवेन्यू जनरेट करने से लेकर उन्हें ड्रेस, ट्रेन और ब्रीड भी कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी पेट एलर्जी के। वहीं मेटागोची प्लेटफॉर्म पर आप अपने बच्चों की पेट रखने की ख्वाहिशें या फिर कहें जिद को भी पूरा कर सकते हैं। जबकि पेट्स को लेकर गेम खेलने का शौक रखने वाले पेट लवर्स खेल खेल में एक्सी इन्फिनिटी मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल ब्रीडिंग के जरिए नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। अगर आप कैट लवर हैं या कैट से प्यार करते हैं, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिप्टो किटीज ही वो सही जगह है जहां आप अलग अलग कैट्स को बाय, कलेक्ट और ब्रीड कर सकते हैं। आज की स्टोरी के बाद मुझे यकीन है कि आप सभी अपने पसंदीदा पेट को डिजाइन करने के लिए बहुत उतावले हो रहे होंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्टार्ट योर पेट मेटावर्स जर्नी नाउ। मैं तो जा रही हूँ अपने पेट मेटावर्स में पेनी के साथ खेलने। आई थिंक शी इज मिसिंग मी। अभी तो मैं पेट मेटावर्स जा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपकी होस्ट और दोस्त रुचि शर्मा मेटावर्स से जुड़ी ऐसी ही कोई अलग, अद्भुत, एडवेंचरस और अमेजिंग दुनिया लेकर आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए 3.tv और ऐसी ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर लॉगिन करें या फिर QR कोड को स्कैन करें। तो फिलहाल मैं तो चली, लेकिन प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, वरना पेनी को आपके पीछे छोड़ दूंगी। बाय बाय। Whether you are an entrepreneur, investment banker, or market participant, You would definitely want to know about mergers and acquisitions, fundraising, and which way millions of dollars are heading in the big deals of the Web3 world.
Find out all of that and more on a special show, Deal Corner, every Monday at 6:45 p.m. only on 3.0 TV. Whether you are an entrepreneur, investment banker, or market participant, You would definitely want to know about mergers and acquisitions. fundraising, and which way millions of dollars are heading in the big deals of the Web3 world. Find out all of that and more on a special show, Deal Corner, every Monday at 6:45 p.m. only on 3.0 TV.